के लिए और कॉर्पोरेट स्कैन की बारी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ इतीरा डेविस सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। डेविस सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, आप लोग को याद होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खबरों में इसीलिए था कि इसने QIP इशुएंस के जरिए 475 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करे थे। 21 रुपए पे इश्यू प्राइस तय हुआ था, जो कि मेरे ख्याल से फ्लोर प्राइस से करीब 4.25% के आसपास का डिस्काउंट था। अच्छा, वो बड़े नाम, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने QIP में सब्सक्राइब करा, उनके नाम तो आपने शेयर करे देविस सर, पर ओवरऑल रिस्पांस कैसा रहा इस QIP में? Good morning, Ashish. Yeah, thank you for your question and good to be here with CNBC. Yeah, the response was very good. We had investments from our long-term partners, some of the insurance companies, some foreign investors. And I think the overall response was about 3.3 times the subscription required. So at this current point, it's a very good subscription. And I think, both the investors and the bank is happy with the way it has gone. जो बड़े नाम थे डेविस सर, उसमें इन्वेस्टर्स में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो आपने मां की लिस्ट शेयर करी थी, जो बड़े इन्वेस्टर्स आए, वो ज्यादातर सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज QIP में आती हुई नजर आई इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स में। क्या ये वो कोरिलेशन है कि बैंक इंश्योरेंस का वर्क होता है इसीलिए सिर्फ इंश्योरेंस प्लेयर्स ने सब्सक्राइब करा, या इंश्योरेंस प्लेयर्स के साथ जो टर्म्स हैं उसके चलते ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ने QIP में लार्जली सब्सक्राइब करा? No, 2 or 3 are. We have 4 insurance companies. We have Birla Mutual Fund. We have Abacus, and we have some of the foreign investors also. So it's an institutional placement. So you will only see institutional clients. Some of these insurance companies have been our partners before, and that is the background in the way they have come. But overall, it's a fairly good group of people that have come to invest with us. नाम अच्छे हैं, मैंने भी देखा, वो सब नाम अच्छे हैं उसमें, क्योंकि वो नजर आया ज्यादातर सब इंश्योरेंस प्लेयर्स थे। तो मैंने पूछूं आपसे ऐसा क्यों कि कोई क्योंकि आप बिजनेस करते हो उनके साथ तो ज्यादा समझते हो आपको, इसीलिए भी उन्होंने सब्सक्राइब किया। जो भी, हाँ, मां की लिस्ट थी, अच्छी लिस्ट थी। अच्छा, इस सक्सेसफुल फंड रेज के बाद डेविस सर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आर आल्सो देयर। यस, पार्टनरशिप्स। हाँ, वो लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा। अच्छे फंड रेज, 475 करोड़ रुपए की फंड रेज के बाद टियर 1 रेशियो आपका 18.7 से बढ़कर 22.4% पे आ गया। कैपिटलाइजेशन स्ट्रेंथन हुआ है। इसका कमेंसुरेट इंपैक्ट, किस तरह की लोन ग्रोथ आप आते हुए देख रहे हो? जरूर। कोविड के पहले we were at 26%. COVID affected us. COVID was an act of God. We couldn't control that. Now the recovery is in our hands. So with this tier 1, and we also raised a few days earlier to that, we raised some tier 2. So we are between tier 1 and tier 2, we are back at 26%. And that allows us to build on the model which we follow, which is, our largest business group is the micro banking. That model requires a little bit of extra capitalization. And that is why we have gone back to the 26% where we were before. And that allows us to grow our business for the next 12, 18, 24 months. कोविड की बात छेड़ी डेविड सर, ये कोविड रिलेटेड प्रोविजनिंग, कोविड रिलेटेड स्ट्रेस, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है क्या? अभी भी प्रोवाइड फॉर करना पड़ रहा है क्या? और कब तक खत्म होगा, कब तक लास्ट ट्रांच? क्योंकि शायद आपके केस में पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ पे तो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। नहीं, अभी there is no continuation. That was been fully provided. Which is why if you see our fourth quarter result and the first quarter results, we are back in profits. So there is no provisioning required. And I do not expect, provisioning in the near future, because all the issues connected with COVID have been fully addressed by Ujjivan. Ujjivan is one of the banks which took those things up front. And that is why we had a difficult year last year. Now we are recovering, and all those issues are far behind us. रिजल्ट्स की हाईलाइट थी लास्ट क्वार्टर की वो नेट NPA लेवल्स, मेयर 0.11%। किसी भी लेंडर में सबसे कम वो नेट NNPA के लेवल्स थे, कमेंडेबल था।
जाते जाते सर आखिरी सवाल, वो अमेलगमेशन को लेकर अपडेट्स क्या है? We are now eligible after this QIP. The minimum public shareholding has been increased little beyond 25%. With that, SEBI is okay for us to move forward, because that was one of the conditions that SEBI had said, that we have to reach minimum public shareholding before we can move with the reverse merger. So we have met SEBI's requirement. Now we will go back to RBI and seek final approval from RBI. After that, it will be, the shareholders and the NCLT which has to approve it. So that is the final condition. And we hope that all of this can be completed in the next 12 to 15 months. साल सवा साल में शायद ये एक मर्ज्ड एंटिटी के तौर पे नजर आए। डेविड सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में हमें समझाने के लिए। Thank you very much. और इस बीच